your virtual class learning lectures. I hope you all are enjoying the lectures because for especially 12 commerce exam is nearby there, or I think the exam is completed. Okay, because when will my lecture publish? It will not confirm. That is why. Okay, so we have started our third chapter. Its name is Deep Water, and in that we have seen that the author William Douglas has a fear of water, and to overcome this fear, he had made his efforts. So, what type of, we can say that the terrorizing experiments or events happened with him. Then also, he hasn't left the courage and he continued to learn the swimming, and we have to see that what happened in the future with him. So, here we started the story about William, and we have seen that whenever William went early on that day over YMCA pool, and he was seated beside the pool. So, one fat boy came over there and he just pushed down the author into the water. So as soon as he went into the water, the situation of the author was very worse. So he is not able to keep out from the water. So what type of efforts he was doing? Actually, his whole body stopped to give the response, and only his heart and head was functioning little bit. And after that movement, we have seen that his that heart as well as eyes, means he become totally unconscious, and he was feeling that he was like in the lap of his mother. That type of feeling came in his mind. Up to this, we have completed this chapter. Now we move forward. So what happened, that whenever he was feeling about the unconsciousness and he was feeling happy, comfortable in the water, now he liked the water too much, that type of feeling came in the mind of the author. So next what happened, see, then all efforts ceased, I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It whipped out fear, it whipped out terror, there was no more panic. It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. This is nice, to be drowsy, to be sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep. Means the author was thinking like this, I have already explained this, and all the fear of his is wiped out. Now I crossed the oblivion and the curtain of life fell. Means he was fighting between death and life. Then next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be alright now. Let's carry him to the locker room. Now, up to that we have completed that he became unconscious. Now, whenever he was come in the conscious state, he come to know that actually he was lying with stomach, means beside this, उल्टा उसको सुलाया हुआ था near the pool. Somebody has kept him out. किसी ने उसको ऊपर निकाल दिया था, and he was lying on with his stomach down, and he was vomiting. The author was vomiting, and the guy who has pushed him into the water was saying that I was just pulled him. I don't know that this guy doesn't know the swimming. वो जो लड़का था फैन बोलता है कि मैंने तो इसके साथ जोक किया ऐसे ही, मुझे क्या पता था इसको स्विमिंग नहीं आती. इस तरह का कोई पर्सन वो बोल रहा था, and he listened. The another thing is that the one man is saying that if someone has not kept me or this boy up, maybe the boy will die. अगर इसको नहीं निकाला जाता तो शायद से ये लड़का मर जाता. ऐसे कोई पर्सन को उसने बोलते हुए सुना. So the author was carried to the locker room. You know that in swimming pool there are locker rooms are provided by the authority, and because in that we can keep our valuables. So several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. 4 days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in knees and sick to my stomach. Then after some time, the author returned to his home. So whenever he went home, he hadn't eaten anything. He just slept over his bed. But at that time, he was
मीन्स ऑल द बॉडी वॉज हैकिंग, उसकी पूरी बॉडी जो थी वो दुख रही थी, जिसकी वजह से he was just slept down and he was very upset because he has the fear of drowning was haunting him. जो उसकी डूबने का डर था वो उसको डरा रहा था बार बार. Fear of haunting was, the fear of drowning was haunting him and he was feeling like sick. There is no strength in his back as well as in his knees. उसके knees में, legs में, back में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी. So I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. So the writer is saying here that then from this incident he will not return to or he never go back to the pool. वो pool में कभी गया नहीं. Because the fear of drowning haunted him much. उसकी जो डूबने की उसका डर था वो ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि the severe situation happened with him. उसके साथ जो भी हुआ था, that event was very horrible we can say. So after that event the author hadn't courage to went into the pool. कभी वो उसके बाद pool में गया नहीं. फिर क्या हुआ देखो, a few years later, फिर कुछ सालों बाद, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Then after few years, the writer was now elder one, he is big enough and understandable boy, and whenever he went in the water of cascade, you know cascade is a waterfall. जब वो cascade के waterfall पे वहाँ पे गया, so his wish is the desire come up in his mind to take a bath in that cascade, but he get afraid of it because whenever as soon as he was went into the water, the terror created in his mind. तुरंत उसके मन में वो फियर जो था डूबने का वो मन में आ जाता था. आगे वो बता रहे देखो, whenever I was wading the Teton or bumping river or bathing in the warm lake, कभी कभी वो टीटन और बम्पिंग यानी रिवर के अंदर वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी स्विमिंग करने जाता था, तभी भी उसको डर लगता था. whenever he went for bathing in warm lake, लेक का नाम है वार्म, जब वो वार्म लेक में बात करने के लिए गया जो गोट रॉक्स में आता है, तभी भी उसके माइंड में दैट टेरर सीज्ड हिम टू स्विम, जिसकी वजह से उसका जो स्विमिंग करने का एंजॉय जो खुशी थी वो पूरी तरह से वैनिश हो जाती थी. बिकॉज एज सून एज ही एंटर्ड और पुट द लेग्स इन वाटर, द टेरर सीज्ड हिम, वो टेरर उसको बिल्कुल डरा देता था, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं होती. फिर क्या हुआ देखो, एंड इट वुड टेकन पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो पूरी तरह से उसके ऊपर पोजेस हो जाती थी. मीन्स पूरी तरह से द ऑथर कम इनटू द कंट्रोल ऑफ द टेरर, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही वाज मीन्स हिज लेग्स कुड बिकम पैरालाइज्ड एंड ऑटोमेटिकली हिज लेग्स गेट पैरालाइज्ड एंड ले हॉरर कुड ग्रैब माय हार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस द फियर स्टक इन हिज माइंड वेरी हॉरिबली एंड ही हैड नॉट करेज टू कीप पुट इनसाइड द वाटर, जिसकी वजह से वो पानी में जाने से डरता ही था. Then what happened? This handicap stayed with me as years rolled by, in canoeing, on main lakes, fishing or for landlocked salmon. Now the writer is saying that whenever he was abroad, so the fear of drowning kept him or kept the author handicapped, and because of this the author was not ready to keep the himself into the water. So he is saying that in the canoes means small boat. Canoes means what? Small boat. So whenever in the small boat in main lake's name is main. So whenever he went in the main lake for fishing, for the hunting of salmon fish. You know salmon is a type of fish. जब वो वहाँ पे canoes में बैठ के small boat में बैठ के fishing is a one type of hobby guys. सब वो hobby उसकी थी fishing की. जब वो फिशिंग करने के लिए गया स्पेशली सैल्मन का हंट करने के लिए, तो उसके साथ क्या हुआ देखो, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द इसमें दिया हुआ है डेस्यूट्स एंड मेलोडियस इन ओरेगन, एंड फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स. अभी यहाँ पे उसने लेक के नाम बोले हुए. सैल्मन फिश का फिश करने के लिए वो न्यू हैम्पशायर में गया. देन आफ्टर डेस्यूट्स एंड मेट्रोलिटिस, ये जो ओरेगन सिटी में आते थे वहाँ पे वो फिशिंग करने के लिए गए. देन आफ्टर ही वेंट टू कोलंबिया फॉर हंटिंग ऑफ द सैल्मन, और सैल्मन का फिश करने के लिए फिर से वो कोलंबा गया.
कोलंबिया गए, जहाँ पे कौन सा लेक था, बम्पिंग लेक, मीन्स नियर द इन द कैस्केड waterfall. Now wherever I went, the haunting fear of the water followed me and it ruined my fishing trip. And the writer is saying here that whenever he went for fishing all over these lakes, he went in Wang Lake, in Bumping Lake, Parallel Lake, Columbia, near the cascade. As soon as he went there, the fear comes in his mind and that fear seized his heart. वो फियर उसके माइंड में आके उसके हार्ट को बिल्कुल ही वीक कर देते थे, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी. सो ही इज सेइंग दैट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. And that is why the writer is saying here that feeling of drowning terrorizing me so much that I could not able to take the enjoyment of canoeing, boating and swimming. Because as soon as he went into the water, that fear of drowning came into his mind and because of it all the courage of his heart burned down. उसका जो भी एक्साइटमेंट था, उसका जो भी अपने बोलेंगे वी कैन से दैट जो भी उसके अंदर मोटिवेशन होता था वो पूरी तरह से क्या हो जाता था, केप्ट डाउन, पूरी तरह से बैठ जाता था, क्योंकि उसको जो उसके साथ घटना हुई थी इंसिडेंट वही उसको बार बार याद आती थी. नाउ आई यूज्ड एवरीवेयर, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. So this fear followed the writer years after years. So, as the writer is saying that fear take total control over the author, and that because of that, the writer was not get rid of this fear. So finally, he decided in the month of October that I should learn the swimming, okay, but with a personal instructor. Not in a group. Personally, I would take the training of the swimmer with one instructor. So this decision is very nice. So because of this decision, it would be beneficial for him or not. Let's see. I went to a pool and practiced 5 days a week. So after his decision, he had started to practice his swimming, and once in a week, 5 days of a week, he was doing the practice in hour each day a hour he can take the practice. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went thoroughly, a pulley that ran on overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth. So back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. The writer is saying here, when he started the new swimming classes with the personal instructor, so the special arrangement is made by the instructor for the author. He is saying that he had stuck one rope, okay, attached with the pulley, and that pulley is doing the work. As soon as the writer go inside, that pulley will pull him up. That type of arrangement was made by the instructor, and from means in a week, 5 days, 1 hour continuously he was doing the practice. So that will goes for day to day, week to week. Okay, the writer is saying here means what? Day after day, week after week, he continuously has done the practice of swimming. उसने प्रैक्टिस करता ही रहा. दिन के 1 week में 5 days he was doing the practice. फिर 1 hour each day. So hour after hour, day after days, week after week, then he become the master in that. वो उसमें master हो गया. So on each trip across the pool, a bit of the panic seized me. But यहाँ पे क्या होता था? As soon as he was completing the each trip, the fear panicked him more. वो जो fear है उसको तो panic कर ही रही थी. Then also he hasn't been left it. उसने कभी उसको means he hasn't given up the task. उसने अपना काम कभी छोड़ा नहीं. कौन सा काम? Swimming करने का. फिर क्या हुआ देखो? Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under the water and exhale and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. Here, the instructor once had been confirmed that the writer is able to swim in the shallow water. Then after he started
or he had taken the second level. In that level, he had pulled that rope attached to the trolley, and that pulley was we can say that taking off the rider. And in that position, the instructor taught him how to take the face inside the water, how to take the breathing. Okay, first take the deep breath, then go inside the water, again come out of the water, again take the deep breath. This type of exercise the author was doing 100 times a day, and now he was become the master. And because of that, again the writer is saying that whenever I was doing the practice, the terror again comes to me and terrorizes me, but I have lived that terror. मैंने वो terror को ही छोड़ दिया. I left, sorry, not lived, left that terror. वो डर मैंने निकाल दिया. जो वो देखा जाएगा, but I have to learn the swimming. मुझे swimming तो करना ही है. That is means here we can see the determined nature of the author. यहाँ पे हमें author का कौन सा nature समझ में आता है? Determined. He was firm on his decision. वो determined था. उसने सोच के ही रखा था कि कुछ भी हो जाए, I want to be a good swimmer. मुझे swimming करनी है. I have to get rid of this fear of water. मुझे ये fear of water को overcome करना ही है. तो इस तरह से उसने पूरी कोशिश करना शुरू किया. Then after what happened? See, next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. Now, as soon as he went into the water, the legs got frozen. But slowly and gradually, after hundreds of time practicing, the legs, we can say that cooperate with the author, and the author starts practicing in the water. Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl stroke." In the month of October, he started, or he had taken the decision to make the personal instructor and learn to swim. Up to the month of April, he continued his swimming, and finally the instructor had told him that now you are a perfect swimmer. You can take a dive off, you can take the long swimming, because you are now a perfect swimmer. Means long months we can say that the writer had taken to learn the swimming. उसको स्विमिंग सीखने के लिए काफी सारा समय इसके अंदर लग चुका है, बट ही हैड नॉट लेफ्ट, उसने वो छोड़ा नहीं, बिकॉज ही इज वेरी डिटरमाइंड ओवर हिज डिसीजन. सो आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड नाउ, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड. एक्चुअली द जॉब ऑफ द इंस्ट्रक्टर वाज ओवर, बट द फियर ऑफ द राइटर वाज स्टिल इनसाइड हिज माइंड. वो जो फियर थी उसके माइंड में ही थी, इसलिए राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि द इंस्ट्रक्टर जॉब वाज फिनिश्ड बट आई एम नॉट फिनिश्ड. मेरा जॉब अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, बिकॉज he is still have that fear in his mind. So I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. जब वो पूल में अकेला होता था, whenever he was alone in the pool, that fear stricken over him. वो fear फिर से उसके पास में उसको कंट्रोल करने के लिए आ जाती थी. And I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, huh? Well, here is to you. Look, I will go for another length of the pool. Writer यहाँ पे बोल रहा है कि whenever I was swimming alone in the pool at that time, the fear struck over me, but I am replying this fear. Oh, you are coming to afraid me, huh? Okay, let it be. देखता हूँ तुझे. इस तरह से वो fear को धमका के अपने माइंड को कंट्रोल करके उसने फाइनली ही लर्न द स्विमिंग. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. कब तक चलता रहा है? जुलाई तक. But I was still not satisfied. But the satisfaction was not one bit in the mind of the author. I was not sure that all the terror had left. So I went to the lake Wentworth in New Hampshire. फिर न्यू हैम्पशायर में गया. वहाँ पे कौन सा लेक था? वेंटवर्थ. राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि till July I have continued my practice, but I was not satisfied with it. So I decided to go to New Hampshire, and there in the lake Wentworth I decided to take the dive. उसने सोचा कि मैं वहाँ पे डाइव करता हूँ और स्विमिंग करता हूँ. सो डाइव ऑफ अ डॉग एट ट्रिग्रीज आइलैंड. ट्रिग्रीज जो आइलैंड था वहाँ पे उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया. swam 2 miles across the lake to Staff Act Island. I swam the crawl, wrist stroke, side stroke, back stroke. ये सारे टाइप्स है स्विमिंग के, वो सब कुछ सीख रहा था. कौन से लेक में? वेंटवर्थ में. जब वो हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक में गया तब उसने क्या क्या सीखा? देखो, हाउ टू क्रॉल, हाउ टू टेक द ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक. ये सारे स्विमिंग के टाइप्स है.
तुम लोगों में से किसी ने जिसको स्विमिंग सीखी होगी उसको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये सारे वो ट्राई कर रहा था, कहाँ पे, वेंटवर्थ लेक में। देन ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। अगेन हियर द टेरर रिटर्न टू हिम व्हेनेवर ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब वो लेक के बिल्कुल बीच में आ गया तो वो जो डर था वो फिर से वापस आया। फिर क्या हुआ देखो, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in a miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. उसने उसका फेस पानी के अंदर रखा और उसने अंदर देखा तो he had able to see only water is there and he is approached, the fear approached him and he is saying to the fear, "Oh, Mr. Fear, you came here for getting feared me, but I am not getting feared now." वो उसको fear को ऐसे बोल रहा है, means he finally we can say here at this stage he totally overcome his fear of drowning. उसकी जो डूबने का डर था finally gone, पूरी तरह से वो निकल गया। And yet I had residual doubts. At my first opportunity I hurried west, went up to the Teton to Conrad Meadows. फिर वो यहाँ पे बोल रहा है कि फिर उसने उसका जो जर्नी है वो शुरू ही रखा। लिटिल बिट डाउट ही इज हैविंग, बट उसने कभी भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। जब वो वेस्ट में गया वो फिर से टीटोन लेक में गया, कॉनराड मीडोज में गया, अप टू कॉर्नर क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर और कैंप्ड इन हिज हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। The next morning I slipped, dived into the lake and swam across to the other shore and back. Just as Doc Corbin used to do, I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. Or finally, when he went for swimming in the lake warm. Listen, students. Sometimes in the exam, the question will come where finally at which lake the author had totally removed his fear of drowning. So the answer is in warm lake. Whenever the author went in the warm lake and whenever he tried to swim there, he crossed the Gilbert Peak, okay, and he swimmed very well, and whenever he returned to the Gilbert Peak, mountain peak, he we can say that roared very loudly, and the echo comes to me that finally I conquered my fear of water. He is saying there so. वो इस तरह से बोल रहा है कि मैंने फाइनली मेरा जो डर था वो पूरी तरह से छोड़ दिया और मेरे जो पानी का डर है पूरी तरह से निकल गया। कहाँ पे निकला, कौन से लेक में निकला, वार्म लेक। नाउ आगे राइटर बोल रहा है, द एक्सपीरियंस हैड टू अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। द राइटर इज सेइंग दैट नाउ ही मेड द क्लैरिफिकेशन, ही कैन एबल टू मेक द क्लैरिफिकेशन बिटवीन फियर ऑफ डेथ एंड डेथ। डेथ क्या है और डेथ का डर क्या है उसका क्लैरिफिकेशन वो कर पाया। देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि डेथ इज गुड, ओके, बट द फियर ऑफ डेथ इज वेरी बैड। एक बार मर जाए इंसान को अच्छा है, बट उसका जो डर है वही इंसान को आधा मार देता है। यहाँ पे उसने वो क्लैरिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। वो आगे बोल रहा है, देखो मैं लाइन फिर से पढ़ूंगी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन अ स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। In death there is a peace, डेथ में पीस है। there is terror only in the fear of death, पर डर कहाँ पे है, डर कहाँ लगता है हमें, जब हम लोग डेथ के बारे में सोचते हैं। As Roosevelt knew when he said all we have to fear is fear itself। रूजवेल्ट ने कहा हुआ है कि फियर जो है वो फियर के अंदर ही होती है। अगर हमें डर कोई पता नहीं, जैसे एग्जांपल ले लो, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को तुम लोग बोलो ना माउंटेन से कूदो, वो कूद जाएंगे क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि वो नीचे गिरेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसको डेथ क्या है वो पता नहीं होती। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमारे समाज, सोसाइटी एंड अदर पीपल हमको डेथ के बारे में बोलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, बैड कॉन्सिक्वेंस के बारे में बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डरते हैं। और छोटे बच्चों के बारे में हम लोग हमेशा बोलते हैं वो एंट्री में हमेशा जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं ना आगे क्या होगा। तो यहाँ पे राइटर ने वही बोला है कि राइटर ने रूजवेल्ट ने बोला हुआ है कि फियर इज फियर इटसेल्फ, डर ही अपने को मार देता है। इसीलिए हमेशा डर आता है तो उसको ओवरकम करना हमें सीखना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि राइटर ने दोनों एक्सपीरियंस किए थे, फियर ऑफ डाइंग, मरने का फियर उसने एक्सपीरियंस किया था, पानी के अंदर वो बेहोश हो जाता है, उसको अच्छी तरह से फीलिंग आने लगती है, वो एक, एंड हाउ इट कैन ओवरकम, और वो आती कैसे है ये भी राइटर को पता लगा। एज सून एज ही
was alone in the swimming pool or he was in the middle of the swimming pool, that fear arose over him. उसके माइंड में fear ऑटोमेटिक आ जाती थी. तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि I experienced both the terrors. First one is the terror of dying and the fear of God. ये दोनों एक्सपीरियंस उसने किए थे and they will live somehow great in the intensity. At last I felt released, free to walk to trails and climb the peaks and to brush aside fear. Because वो फियर को राइटर डरा नहीं, उसने उसको ओवरकम किया और वो बोल रहा है कि मैंने माउंटेन पिक्स भी काफी सारे चढ़े हैं और ये फियर को मैंने फाइनली पूरी तरह से ओवरकम कर दिया. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता. अभी देखो तुम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स दिए, मैं तुमको बता ही देती हूँ, बच्चों को बहुत डाउट है. इसमें तुमको लिखना है स्टूडेंट्स, देखो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. क्या लिखना है? अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. और टेक्स्ट बुक के बीच में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट बुक के बीच में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस भी तुमको लिखने हैं क्योंकि बोर्ड में वो क्वेश्चंस भी आते हैं. फिर ये क्वेश्चंस लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पे तुमको मैं पोएम 3 पढ़ाऊंगी. तब तक के लिए आई होप तुमको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.